हेलो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये डिक्टेशन लिख रहे हैं। वेलकम बैक टू स्टेनो स्कूल्स लीगल डिक्टेशन। ओके, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। सिंस ये क्लास लाइव होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आस्क कि साउंड क्लियर है या नहीं, ये आप एक बार बता दीजिए तो हम अपने इस खूबसूरत से डिक्टेशन की शुरुआत करते हैं। एंड आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आप स्टेनोग्राफर हैं तो आपको डिक्टेशन लिखना है। ठीक है, आपने अगर बेसिक से शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट कर दिया तो आप उसी दिन से अपने आप को स्टेनोग्राफर कह सकते हैं। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है कि किस दिन आप स्पीड खत्म करेंगे उस दिन आप स्टेनोग्राफर कहलाएंगे। यू आर अ स्टेनोग्राफर राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट लर्निंग शॉर्ट हैंड। ओके, और उसी दिन से आपको डिक्टेशन का साथ कभी नहीं छोड़ना है, लगातार डिक्टेशन लिखते रहना है टिल द टाइम यू गेट योर जॉब। जॉब लगने के बाद भी आपको ऑफकोर्स डिक्टेशन दिया जाएगा। कोर्ट में आप अगर लग रहे हैं तो आपको डिक्टेशन लिखते रहना है। ओके, सो दिस कीप्स गोइंग ऑन, दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू एंड यू विल लव दिस थिंग। ठीक है, रिटायरमेंट तक, जब तक आपकी ज़िंदगी चलती है, आप इस स्किल के साथ में हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, सो रिस्पेक्ट योर स्किल, रिस्पेक्ट दी प्रोफेशन जो आपको जॉब देने वाला है। ये जो स्किल है इसकी रिस्पेक्ट कीजिए एंड ट्रीट इट लाइक यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए और डिक्टेशन लगातार लिखते रहिए, स्पीड बढ़ाते रहिए। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर जर्नी, सो वी आर हियर टू सॉल्व ईच एंड एवरी चैलेंज ऑफ योर्स। ओके, चलिए गाइस, गेट रेडी, डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 seconds, प्लीज बी रेडी। Steno School Legal Dictation 3, 2, 1, start. The trial court held that the statements of PW2 Jagdev and PW3 Hardev were relevant and not merely hearsay evidence, and their statements would not be unreliable merely because they were relatives. Stop. The delay in filing the FIR was held to be explained as the complainant was proven to be unfit to make the statement on the day of incident. Stop. The court further noted that though the accused claimed to have been injured, they had not filed a complaint or put any suggestion regarding the same to the prosecution witness. The injuries on the accused were simple in nature. The court held that the conduct of the accused in traveling 1 kilometer from their house, armed with a gandasa, and if inflicting injuries on the complainant proved their common intention, and the medical evidence proved that the injuries inflicted were simple and in one instance grievous in nature. The trial court convicted the respondent and sentenced him to rigorous imprisonment for 3 years with a fine of rupees 1000 for offence punishable under section 326 IPC, and rigorous imprisonment for 1 year with fine of rupees 500 for offence punishable under section 323 IPC. And Love Kaur was also convicted under sections 326 and 323 IPC, read with section 34 IPC, and awarded the same sentence. Stop. Aggrieved by the judgment of the trial court, the respondent and his wife preferred appeal to the Sessions Court,
which noted that there was documentary evidence proving that the accused and complainant were treated by the same doctor. Stop. The presence of the accused at the crime spot was held to be proven. Stop. Love Kaur had no injuries on her person and 6 injuries on the respondent were held to be simple, and its non-explanation was held to be not fatal to the prosecution case. Stop. The sessions judge held that though PW2 and PW3 reached the spot afterwards, the statement of the complainant was enough to conclude that it was the accused who inflicted the injuries. Stop. The sessions judge, however, held that the finger injury was erroneously held to have been grievous, as the radiologist who conducted the X-ray of the said injury and whose report was relied upon by PW6 to hold the injury as grievous, was not examined. Stop. The Sessions Court set aside the conviction of the accused under Section 326 IPC but upheld their conviction under Section 323 IPC, upholding other findings of the trial court. Stop. The sessions judge also noted that Love Kaur was an old lady, who herself had not caused any injury to the complainant and was a first-time offender, and released her on probation on a bond of rupees 20,000 after setting aside her sentence of imprisonment with fine. Stop. The respondent was, however, sentenced to imprisonment of 1.5 years with fine of rupees 1,000. Stop. Aggrieved by the judgment of the Sessions Court, the respondent preferred revision before the High Court. Stop. The respondent did not challenge the court of conviction but sought reduction of the sentence awarded to the period of imprisonment. Full stop. Alright, so this was a speed of 90 words per minute. How was this dictation, guys? Tell me. कितना परसेंट आप लिख पाए इसे बताइए. इस तरह का कॉमा और फुल स्टॉप के साथ में भी आपको कोई कोर्ट में बोला जाएगा तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, कुछ कोर्ट्स में बोले जाते हैं. आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं. बाकी आप लोग प्रैक्टिस मेजॉरिटी किया करो बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप के सुने. ठीक है, लेकिन उसको इंसर्ट ज़रूर किया करो. ठीक है, जब आप लिखते हो. सो इसका एक रूल है, PDF है, वो आई होप सभी के पास में है. नहीं है तो नीचे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग एक बार जाके वहाँ से चेक कर लेना. जो टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा. उस PDF को डेली पढ़ा करो, एक बार 2 बार, और धीरे धीरे आपके कॉमा की, कैपिटलाइजेशन की, आपकी सिंपल ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. 95 ग्रेट, 93 गुड, निकिता 95 एक्सीलेंट, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया. सभी ने अच्छा लिखा है. स्पीड कम थी आज, एज यू ऑल नो. यूट्यूब पे थोड़ा सा स्पीड कम ही हम देते हैं ताकि आप लोग से लिखा पाए. बाकी व्हेन यू आर इन द बैच गूगल मीट पे, आई एम रूथलेस, यू ऑल नो. सो कल से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, डोंट वरी. डेली हम प्रॉपरली डिक्टेशन आगे बढ़ते रहेंगे और सभी लोग आपके नोट्स में लगातार चेक करते जा रहा हूँ. सो दैट्स गोइंग गुड. ओके, ग्रेट. चलो, any doubt guys regarding your court exams or anything?
सेशंस कोर्ट और आपका हाई कोर्ट ये है, तो इसका कोर्ट का सी भी कैपिटल आएगा, सेशन का एस, और जो आपका हाई कोर्ट का एच भी कैपिटल आएगा, ठीक है। बाकी जो आपका ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का आप टी भी स्मॉल कर दो और कोर्ट भी सी का भी सी स्मॉल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंस वो सबऑर्डिनेट को सबसे छोटा लाइक बेसिक सबसे इनिशियल स्टेज का कोर्ट है, तो उसका अगर स्मॉल भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान देना। बाकी गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो ऑन द स्पीड बैच। If you all are really serious about exams, I'll highly recommend you join the speed batch, daily dictations लिखिए and see the improvement using the exam software, tough exam software, ठीक है। चलो, like this stream, like this video, if you have taken the dictation, नीचे comment section में लिखना आपकी accuracy कितनी है, okay। Thank you so much guys, bye bye everyone, good night, take care, God bless you all।